Yeah. Good morning, everyone. Thank you for joining us. Today is a wonderful day. The only reason we have joined is because we all love to create wealth. I'm sure for that. And believe me, if you're joining, means aapko ye mil gayi hai, you are one of the lucky ones because we have got some unbelievable response out of it. We had some 500 plus registration in the sits of 100, and yeah, you're one of them. So let us go that we are lucky. I'll introduce myself. I am Rohan Mehta. For remembering my name, you can remember with me Rome. That is Rohan Mehta, initial of Rohan and Mehta. Rome was not built in a day, but can be destroyed in a day. Similarly, wealth is not built in a day, but can be destroyed in a day. There are very few people who know the difference. Our company name is Turtle. I'm the fund manager and CEO. Our core purpose is to create exceptional wealth and to make rich people more wealthy. Uh, Very few people know that turtle and tortoises are different. Tortoises is slow and steady. Turtle is in fast and reliable. We are fast and reliable. We are not slow and steady. एंड जब बहुत साल पहले जब राजा युद्ध पे जाया करते थे तो सेनाओं को क्रोकोडाइल या कोई दूसरे जानवर की खाल की ढाल बनाते थे, पर जब राजा की बारी आती थी वो टर्टल की ढाल बनाते थे बिकॉज टर्टल वाज एंड इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल एंड मैमल इन द वर्ल्ड. So the same way we at Turtle are very, very curious into risk management, creating exceptional wealth, and that's how we are there. So every month we do to show you that how we can create your wealth, and of course we can be a wealth participant to each other. India can be no more a country where it is a हम बोलते हैं कि गरीब country. It is a prosperous country, and we as an individual, as a citizen, has this ability to make India as more wealthy country. So going on to that part, so this today's session is next big opportunities. So जब opportunities की बात आती है तब Indians तो मीन्स ओपन हो जाता है अपना माइंड. तो हम सोच रहे थे कि क्यों ऐसा कुछ कर सके कि हम आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी दे सके जहां पे बड़ा पैसा बन सकता है कमिंग टाइम में, जो शायद 80% लोग ये स्टॉक की या इन्वेस्टमेंट थिंग की बात नहीं कर रहे हैं. So I'll start with a spiritual story. Anybody who is religious who can listen, anybody who is not spiritual also can listen, anybody who is atheist can just listen as a story. So Lakshmi Mata, which in Hindu mythology is been taken as the goddess of wealth, जो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी माता. तो लक्ष्मी माता तो बहुत सालों पहले में जब भगवान पशु बने थे तो पशुओं ने सब ने एक इकट्ठा एक मीटिंग की कि हम और भगवान को रिक्वेस्ट किया, सब भगवानों को, कि हमको आपका वाहन बनने दो. तो भगवान ने बोला कि हाँ ठीक है, आप बन सकते हो बिकॉज हमको भी ट्रैवल करना है. फिर जब लक्ष्मी माता की बारी आई चूज करने में एनिमल में, तो बहुत लोगों की भीड़ हो गई. तो सबने बोला कि हमको आपका वाहन बनना है, हमको आपका वाहन बनना है. फिर लक्ष्मी माता ने बोला कि मैं बहुत सालों के बाद कार्तिकीय अमावस्या पे, दैट इज व्हाट वी सेलिब्रेट एज दिवाली, विल कम एट नाइट एंड आई विल चूज एट दैट टाइम कि मैं किसको मेरे वाहन लूंगी. So she came down and after a long time, तो रात को तो सब प्राणी सो गए थे, तो एक ही प्राणी जाग रहा था, वो है घुवड़, जो उसको हम उल्लू बोलते हैं या आउल बोलते हैं. एंड देन शी चोज, बिकॉज आउल उसके पास फर्स्ट गया, उसने बोला कि मुझे आपका वाहन होना है. एंड दैट इज द रीजन. हम आप देखो तो जो अपॉर्चुनिटीज किसी को नहीं दिखती है पर बहुत कम लोगों को दिखती है, वहां पे ही लक्ष्मी माता का स्थान होता है. और दूसरा, लक्ष्मी माता का विराजमान होता है कमल पे. सो कमल अगेन इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बट इट इज अवेलेबल एट अ वेरी डर्टी प्लेस. Again it comes to stock markets that the things which are very very dirty and a कमल बीच में खिलता है, बहुत लोग लेने नहीं जाते हैं, पर वहां पे ही लक्ष्मी माता का स्थापन होता है. So very short story to start this beautiful day about opportunities. I'm sure do share this story with your kids. It really means a lot. Means अब अगर हिंदू माइथोलॉजी में जाओगे तो ये पूरा उसका शास्त्र है कि कैसे आउल और लक्ष्मी जी कैसे एक दूसरे को मिले. So I kept it very short. So coming back to the business and about investments.
So the three parts I'm going to take is value migration. Second is the big macro theme, and third is the top 10 opportunities in coming time. ठीक है, तो आप पूरा अपना फोकस यहाँ पे रखना, आप कहीं पे घूमना मत। और 90% ऑफ द टाइम अगर आपने ये छोड़ दिया ये सेशन, तो आपको शायद री एंट्री मिलना पॉसिबल नहीं होगा। सो एक बुक है जो बहुत बढ़िया बुक लिखी गई है सालों पहले, वो बाय एड्रायन। वो वैल्यू माइग्रेशन पे, हाउ थिंक सेवरल मूव्स अहेड ऑफ कंपटीशन। मींस ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो लोग नहीं देखते हैं और आप कैसे देख सकते हो, बिकॉज वैल्यू इज ऑलवेज माइग्रेटेड टू फ्रॉम अ लेसर अपॉर्चुनिटी टू अ बिगर अपॉर्चुनिटी इन अ लॉन्गर टर्म स्केल। सो आज इतने साइकिल में 30-35 ईयर्स के इंडियन साइकिल में वैल्यू माइग्रेशन तकरीबन 4 to 5 टाइम्स बड़ा हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे, तो पहले समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है वैल्यू माइग्रेशन का। पिकिंग टुमारोज विनर इन डिसरप्टिव टाइम्स, कि कल के जो विनर है जो आज अच्छे नहीं है, वेर नो वन बिलीव्स, कोई नहीं बिलीव करता है उसको, जो रात में गोड़ आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच आर अवेलेबल एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। मीन्स एकदम मुफ्त के भाव में मिल रहा है या मुफ्त के प्राइस में मिल रहा है, वैल्यू में या प्राइस में। अच्छा, प्राइस मतलब सस्ता नहीं, मीन्स ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप समझते हो प्राइस यानी सस्ता कि भाई 50 रुपए की कंपनी मिल रही है, नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही है विद अवर ट्रिपल पी प्रोसेस। अगर ये सेट हो रहा है वैल्यू माइग्रेशन में, देन फॉर अस इट इज अ वैल्यू माइग्रेशन वेयर इट सेट्स टू बी अ सुपीरियर वैल्यू क्रिएशन। सो अगर मैं आपको वैल्यू माइग्रेशन का एक एग्जांपल दूं, तो हम 2008 में हमने सीक्लिकल बिजनेस देखा। ये पूरा सीक्लिकल, अगर मैं 2008 में आपको पोर्टफोलियो की बात करूं, तो मोस्ट ऑफ लोग इंक्लूडिंग मी, मेरे पास था इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट्स, कैपिटल गुड्स, पावर ट्रांसमिशन, सीक्लिकल मेटल्स, यही सब थे। आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री टू इट। और आज मैं किसी के भी पोर्टफोलियो में 80-90% स्टॉक ये नहीं देखता हूं। अभी आपके पोर्टफोलियो में होगा प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज ये होगी जो कंपनी आगे कंसिस्टेंट बड़ी है, एफएमसीजी होगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल होगी, कंज्यूमर स्टेपल्स होगी। पर अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की या पावर ट्रांसमिशन की या सीक्लिकल बिजनेस की, तो तकरीबन 80 to 90% ये पोर्टफोलियो में आपका नहीं होगा। So, cyclical to quality and quality to cyclical. So, at the same time, if I would have told every one of you sitting in 2008 that, boss, the cyclical stand is going from quality. Quality means, for example, I'll give you an example once, I'll take this ahead. But अगर मैंने आपको बोला होता that can we invest in FMCG, or can we invest in Hindustan Unilever, or can we investing in Procter and Gamble, or can we invest in a Nestle, you would have told in 2008, boss, these are boring companies, I don't want to go into it because it doesn't make sense, it doesn't create wealth, because 10 साल से उसने wealth नहीं create किया। फिर अगर आप ने लास्ट 10 साल देखो, तो ये जो सिक्लिकल कंपनीज थी वो सब ने बंद कर दिया रिटर्न देना, और ये सब कंपनीज जो क्वालिटी कंपनीज थी उसने एक्सेप्शनल क्रिएशन किया है। But now we feel the whole cycle is again going to change to cyclical. So it's cyclical to quality, quality to cyclical. This is a huge value migration which will happen. अगर मैं ये पॉइंट पे भी ये सेशन बंद कर दूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि नेक्स्ट 10 साल की और नेक्स्ट 5 साल की मैंने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सो 2010 टू 2021 मैंने जो आपको बोला, पूरा साइकिल चेंज हो गया है। एंड अपॉर्चुनिटी, सी व्हाट इज वैल्यू माइग्रेशन मोर अबाउट इज दैट व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट के आप लूज करोगे तो परसेंटेज में लूज करोगे, पर आप जब बनाओगे तो आप एक्स में बनाओगे। मींस इफ यू विल अर्न, you will earn in if you will earn, you will earn in times. If you will lose, if you will lose in percentage, if you have a chance of losing. So your risk versus reward ratio is exceptionally proportionately high in comparison to now the companies which are available at 100 times of valuation, or 150 times of valuation, or an 80-90 times of valuation. Now I don't mean that this companies which are available right now at 100x of valuation will not grow. It may grow, it depends on business to business. But
their value migration, the qualities which will grow more better will be the companies which is exceptionally moving from a no performer to a tomorrow's performer. I means हम turtle पे एक हमारी आदत है कि in 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 emotions, in God we believe, rest everything is data. So whatever I am talking right now is backed with data. It is not my perception or my team's perception, it's the data what is talking for. And believe me, data doesn't lie. So I've taken this example of Hindustan Unilever. If you can see over here, Hardik, can you see the red dot? No. Yes, No. yes, I can see now. Yes, okay. So everyone who is seeing this, please see the red dot very clearly because red dot is very important. So अगर आप देखोगे 12 years Hindustan Unilever consolidated. And after in 2009 10 9 10 when the cycle started moving, the stock Hindustan Unilever, the biggest FMCG company in the world, जो लास्ट 12 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया है, started to cycle to pick up, and then today is an 8x stock. मीन्स लास्ट 10 साल में उसने 800% रिटर्न बनाया है. मैं एक फ्रंट लाइन हिंदुस्तान लीवर की बात कर रहा हूं, नहीं कि एक मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेट वैल्यू माइग्रेशन व्हिच हैज हैपेंड इन लास्ट years, last decades. I'll tell you a story of Bajaj Finance. Means हम आज बोलते हैं कि बॉस बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, but you would be surprised to know that 16 साल 16 years बजाज फाइनेंस ने जीरो रिटर्न दिया था. मींस जीरो रिटर्न यानी तकरीबन एफडी से भी कम रिटर्न दिया था, बिकॉज 1994 में एफडी का आपका रिटर्न था तकरीबन 12 से 15% था. तो 12 से 15% भी कंपाउंडिंग नहीं किया था. And 2010-12, the cycle started moving, and you saw this company be 71x, 71 times return, 7,100% रिटर्न. मीन्स आप 10 साल में देखोगे तो 700% एक साल का रिटर्न. क्रेजी द वैल्यू माइग्रेशन विच हैज स्टार्टेड टू हैपन. सेम वह चीज आप कोई भी केमिकल कंपनी उठा लो, आप उठा लो हैग, गुजरात अल्कली, रेन कमोडिटीज, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, ये सब कंपनीज 20-20 25-25 साल का कंसोलिडेशन ब्रेक किया, एंड द वैल्यू साइकिल स्टार्टेड मूविंग, एंड द स्टॉक वेंट फ्रॉम 12x to 50x to 30x इन दैट लास्ट 10 years. सो ये जो कंपनीज की हम आज बात करने वाले हैं, ये यही जोन पे है कि अगर ये राइट हुई तो दिस इज अ 10x स्टोरी, पर अगर ये नहीं चली तो दिस इज अ 10-20% डाउनसाइड स्टोरी. सो योर एक्स इज 1:100 ओवर हियर, एंड दैट इज मैग्निफिसेंट. बिलीव मी, ये एक्स सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में मिल सकता है, नहीं कि कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट में मिल सकता है. हम बहुत क्लियरली मानते हैं कि नेक्स्ट 10 साल में इफ यू वांट टू ग्रो अबाउट 10x of what you are today, there are only two ways. एक, या तो आपका सर्वश्रेष्ठ धंधा करो और उसको लिस्ट करो, या दूसरा आपके पास धंधा नहीं हो तो जो राइट नाउ सर्वश्रेष्ठ धंधा मिल रहा है उसमें निवेश करो. यही दो आंसर है आपको आगे बढ़ने के लिए, वेल्दी होने के लिए. सो लेट मी टेक यू टू द बिग मैक्रो थीम. सो इंडियन जीडीपी, हम किसी भी देश की जीडीपी और अपनी देश की जीडीपी की बात करें तो तीन सेगमेंट पे होती है. एक होती है सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. सो ये कोई भी ऑर्डर में नहीं है, जस्ट ये नाम मुझे जैसे रिकॉल हुए. तो एग्रीकल्चर हैज इट्स ओन इशू. एग्रीकल्चर अपने आप में एक पूरा साइकिल चेंज हो रहा है, और जब एग्रीकल्चर का साइकिल चेंज होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, न्यू थिंग्स आर कमिंग, you will see a great value erosion, value expansion there also. But right now we feel that is not the right time. The next value creation is coming. सर्विस इंडस्ट्री लास्ट 10 साल से आप देखो जितना भी कुछ कंपनी में और कंट्री में एक्सपांशन हुआ है, या तो ये कंजम्पशन साइड था या सर्विस साइड था. पर नाउ द बिगेस्ट थिंग कम्स इज मैन्युफैक्चरिंग. Why manufacturing? So now I can give you a 3 hours presentation on manufacturing, but I would want to curtail it very short. So there are four reasons I will first say on manufacturing side. First of all, चाइना जो बंद हुआ, मीन्स आप हम डिबेट कर सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन वाज राइट और नॉट.
हम डिबेट कर सकते हैं कि जीएसटी वाज राइट और रॉन्ग, हम डिबेट कर सकते हैं कि दूसरे एजेंडा वाज राइट एंड रॉन्ग, बट आई एम श्योर ऑल द पीपल हु आर व्यूइंग ओवर हियर will not debate that make in India is right or wrong, because make in India is the next 10 years theme. And believe me, make in India is much more than what we can envisage also. Skill India is 10x more than what it can be doing. So ये पूरा जो थीम है, और चाइना का जो हेट हो रहा है, और चाइना की प्रोडक्ट हम एक्सेप्ट करने में, means we are having a problem to accept. I'll give you an anecdote which has happened in my company. So we are very very clear into every minuscule parts of when it comes to our client obsession. So हमने सोचा कि हम क्या क्लाइंट को दे जब वो एनरोल हुए हमारे साथ. सो हमारी टीम और हमने सब ने डिसाइड किया कि वी इट हैज टू बी वेरी मीनिंगफुल थिंग, बिकॉज आज हम सब एचएनआई के साथ काम कर रहे हैं, तो मटेरियल गिफ्ट देना तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज दे कुड हैव बॉट एनी मटेरियल गिफ्ट इन द वर्ल्ड. सो हमने ये सोचा कि हम उसको चाइनीज बैम्बू देते हैं, बिकॉज चाइनीज बैम्बू की फिलोसॉफी है कि आप पानी डालो 4 साल तक कुछ नहीं होता है, 4.5 साल के बाद बढ़ने लगता है, एंड इन्वेस्टमेंट भी यही होता है. सो वन ऑफ आवर टीम मेंबर Ayushi, Sachi, everybody who's a very integral part of the team, shared with me a superior thought कि सर इसको चाइनीज बैम्बू नाम नहीं रखते हैं. बोला यार ये तो चाइनीज बैम्बू ही बोला जाता है. बोला सर पर चाइनीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया एंड हमको नहीं रखना चाहिए. बोला बात भी सही है, तो हम क्या रखें. फिर हमने पूरा रिसर्च किया और उसको ये लकी बाम्बू भी बोलते हैं, तो हमने लकी बाम्बू नाम रख दिया, बिकॉज पीपल आर सो मच नाउ certain that we want to get products of India. And believe me, this small things impacts a huge cyclical change in our behavior about taking the products and services. So एक तो है robust demand. आज आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फोन करके पूछ लो कि बॉस कैसी डिमांड है तेरे वहां पे, वो बोलेगा कि मेरे पास काम का फुर्सत ही नहीं है. आई डोंट हैव मैन पावर, आई डोंट हैव द रॉ मटेरियल, आई डोंट हैव द लेबर. The reason is the demand is exceptionally superior. हम एक कंपनी से बात कर रहे थे that holds 10% market share of ceramics. It says that आज मेरे पास टाइम ही नहीं है डिलीवर करने के लिए. I'm 3 years of batch orders. So this is crazy. It has never happened in Indian context of what you can say the exceptional movements. ये डिमांड हुई थी 2006-7 में और ये डिमांड अभी चालू. By 2030, Indian middle class is expected to have the second largest share in global consumption to 17%. और this is radical data. I'll tell you, मैं अब नंबर में जाऊंगा, आप शॉक हो जाओगे, नंबर हम जीरो गिन नहीं. And increasing investments means if you see the companies are doing, entrepreneurs are going, people are going more sophisticated, more system oriented, people are taking softwares and ERPs and stuffs like that. So increasing of investment, expansion of plants, and of course increasing of business. And then you see policy support of make in India and etc. Production incentive schemes आ गई है, बहुत सारी चीज है जो हम पॉलिसी सपोर्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को. हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई 100% प्रोग्रेस नहीं है कि भाई नहीं ये सुपीरियर है, चैलेंजेस है, पर सी एज एन कंट्री वी आर स्टिल अ 70 ईयर ओल्ड कंट्री, राइट. तो 70 ईयर ओल्ड कंट्री, और आप यूएस की बात करें तो दे आर 400-500 ईयर्स ओल्ड कंट्री. सो हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, सो एवरीथिंग वोंट गो फास्ट, but the government what it is doing is exceptionally amazing. And competitive advantage है, increasing share of young working population. आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आप देखो तो एमजी मॉरिस गैरेज हैज नाउ 48% of lady working staff, women working staff in their office, in their whole ecosystem. Just imagine what was 15 years back this data. And the more people, because India is always a working labor or working a manpower deficit country. हम बोलते हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है. बॉस मैं आपको बताऊं, एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो मुझे बोलती है कि मेरे पास ओवर स्टाफ है. सबके पास अंडर स्टाफ है. एवरीबडी वांट्स अ बेटर people. So better recruitment and better ecosystem in their company. India can achieve its full manufacturing potential and it looks to benefit from its demographic dividend and a large workforce over the next 2 or 3 decades. Means lady will start working, people from countries will start. means आज मैं hotels में जाता हूँ, I travel across hotel में जाता हूँ, I see on breakfast at least 30% of the foreign delegates sitting and having a breakfast.
नहीं, पहले नहीं देखता था मैं, because people want to come to India and do businesses. There will be a lot of joint ventures, there will be a lot of things which is happening, and you won't believe what will be 10 years of manufacturing from now. So I'll take you this Indian manufacturing PMI, that is manufacturing index. अगर आप देखो ये ऑल टाइम है, ये 25 साल का इंडेक्स है. 25 साल के इंडेक्स में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है. And there we start the expansion of index. So we have seen an all time high around 58, and we will see again a 70 to 80 on coming preceding years. So this is why we feel that इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थीम. लास्ट 10 साल में एकदम म्यूट रहा है. चाइना ने पूरा बिजनेस ले लिया है. जो चाली मंगर बोलते हैं लोला पुलाजा, आई थिंक सो ये सबसे बेस्ट लोला पुलाजा है जहां पे सब कुछ राइट एक टाइम पे हुआ है. एंड दैट्स वेयर द वैल्यू क्रिएशन हैपेंस, बिलीव मी. सो दैट्स व्हाट इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर विथ यू. So let us go directly into the next 10 massive wealth creation opportunities. जब हम 10 मैसिव वेरी स्पेसिफिक बात करते हैं तो सबको इंटरेस्ट आ जाता है. हम फर्स्ट let us understand that India being a super in next 10 years, the biggest theme is manufacturing, and then this next 10 massive wealth creation opportunity also is backed directly or indirectly for this 10 massive opportunities backed by manufacturing. So this is how the whole ecosystem has started. So first of all, let me put it. Anybody who doesn't know, total wealth is investing process. We have a triple P investing process called price, profits, and people. Price में the stock has to be have a huge consolidation zone. उसके बाद breakout आना चाहिए. It should be above its 212 EMA. We decide first when to exit before we enter. प्रॉफिट्स में वी सी द कंपनी इज डूइंग एक्सेप्शनली, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे भाव पे मिलनी चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन वी डू पीपल इज डूइंग स्कटल बट अप्रोच अबाउट गेटिंग मोर इनटू द स्किन ऑफ द कंपनी, getting more information. It is not insider information, but knowing the nitty gritties of the company which will not be available on website or will not be available on annual reports or any other places. So getting more into the skin of the company. So that's all about triple P stock investing process. In the whole fraternity of PMS, we are the one of the most organized stock picking process what we have come through. So before I give you this 10 opportunities, let me put some safe harbor to you. First, you will not like and agree with this stock. मीन्स ये तो पहला हो गया है. अगर आप अग्री करते हो तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिलीव मी. I have seen the companies people don't agree to, we make the most money out of it, and the people everybody agrees to makes a mediocre money out of it. These stocks are not for short term investment. I'm talking for a cycle for 3 to 5 to 10 years cycle. ये 3 week या 3 दिन का stock investments नहीं है. We are we or our client, हम टर्टल वेल्थ और हमारे क्लाइंट ये स्टॉक में शायद इन्वेस्टेड भी हो सकते हैं और हमारी पोजीशंस भी हो सकती है. सो जस्ट आई एम पुटिंग अ डिस्क्लेमर. सो हमारा वाइटल इंटरेस्ट भी हो सकता है कल उठ के. हमारा हमेशा से एक मानना है कि हम अगर वैल्यू माइग्रेशन में 10 स्टॉक भी ले और सिर्फ 2 स्टॉक ही 10x वेल्थ क्रिएट कर सकती है, इट्स अ ग्रेट थीम टू इन्वेस्ट फॉर. These stocks are backed by triple P process, as I told. Entry, exit and allocation is key to the opportunity. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये स्टॉक है. मैं बोलता हूँ अच्छा, आपके पास ये स्टॉक है, कितना परसेंट एलोकेशन है? तो बोलते हैं कि यार मेरे पास तो 1% से भी कम है. बिलीव मी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बिकॉज अगर आपके पास एक स्टॉक हो और 10% एलोकेशन नहीं हो और वहां से वो 10x ग्रोथ होता है, तो भी आपका पोर्टफोलियो सिर्फ डबल होता है, टोटल पोर्टफोलियो. सो आपका इंडिविजुअल एलोकेशन इन द राइट स्टॉक बहुत मैटर करता है. And of course, the order of what I am telling you, the stock is not a priority. It is just the way we have got the stocks, the way I am presenting to you. So let me go in sync to the stocks. Please focus on the screen because I am going to share a lot of numbers with you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आपको केस स्टडी बताता हूं कि हम ऐसे वैल्यू माइग्रेशन स्टॉक्स में, हमारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने वैल्यू माइग्रेशन पे पिक किए थे, पर अभी रिसेंट जो लास्ट 6 महीने में हुए उसमें कौन से स्टॉक है.
सो शायद मैंने टाटा केमिकल तकरीबन 2-3 सेशन में भी बोला है। टाटा केमिकल की मैं बात करूं, 25 साल तक, 20 साल तक टाटा केमिकल ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए हैं, और बहुत मिनिकल रिटर्न्स दिए हैं। यू आर टॉकिंग द थर्ड लार्जेस्ट सोडा एश कंपनी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड। And आप अगर देखो, we picked up at 350, 380, and whatever the price today is, अभी तो स्टार्ट हुआ है, we picked up at 2 times of valuation, P 2 का था, और there was a yield of 5 to 6% of dividend yield into the company, and see what happened after the cycle picked up, and आज ये सिर्फ 1x 2x है, और मे बी टुमारो क्या हो सकता है। फॉर एवरी डिसीजंस यू डू ऑन व्हाट आई एम टेलिंग, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग दैट। सो अगर आप डेटा की बात देखो, तो मैंने आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा ट्रिपल पी अप्रोच है, प्राइस प्रॉफिट्स, तो प्राइस प्रॉफिट्स में अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट 2009 में ये 648 करोड़ करती थी, और मार्च 2020 में ये 7,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। ऑफ कोर्स 7,000 करोड़ में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर इनकम जो डाइवर्जन हुआ है वहां से ही आया है पैसा, पर द कंपनी स्टार्टेड, फिर आज ये ईवी का नाम आ गया, और बिलीव मी, जब टेस्ला इंडिया में आएगा, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनी कंपनी ऑन टू द ऑटो एंसिलरीज, मीन्स बैटरी बनाने में, ये सब में द बिगेस्ट बेनिफिशियल वुड बी टाटा केमिकल इन कमिंग टाइम। सो दिस इज वन ऑफ द कोर एग्जांपल्स, मीन्स जब भी मैं किसी के पास टाटा केमिकल लेके भी जाता था कि दिस इज अ ग्रेट कंपनी, मैंने 3 साल वेट किया है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि ये बहुत बढ़िया कंपनी। सब बोलते थे नहीं यार ये ढीली बेकार कंपनी है, बेकार, कोई रिटर्न नहीं देता है, उससे अच्छा मैं ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। पर दिस इज द पावर ऑफ वैल्यू माइग्रेशन विच हैपेंस व्हेन इट स्टार्ट्स। You lose in percentage, you may lose in percentage, but you start making it X. सो सेकंड एग्जांपल इज अदानी पोर्ट्स, मींस ये शायद आप सुन रहे हो उसमें से 50% लोग के ने जाना होगा कि अदानी पोर्ट्स वाज वन ऑफ आवर पिक विच आई नेवर लाइक्ड, ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन। पर जब मैंने ये पूरा बिजनेस समझा, तब मुझे ऐसा लगा कि ये कंपनी तो फ्री मिल रही है। 2007 में, 13 साल पहले, ये 250 रुपए की थी, और जब हमने पिक किया 500 रुपए के आसपास, तब ये कंपनी ने 13 साल गुजार दिए थे। और आप देखोगे तो सेल्स 2009 में ये 1200 करोड़ करती थी, और ये प्रॉफिट अभी कर रही है कुछ 12,000 करोड़। सो 10x प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, पर प्राइस सिर्फ 1x 2x बढ़ा। सो नेट नेट प्रॉफिट 433 करोड़ से प्रॉफिट हो गया 4,000 करोड़। नाउ यू आर टॉकिंग द इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट, मीन्स अगर मैन्युफैक्चरिंग होना है तो इंडिया में अदानी पोर्ट्स पे, अदानी पोर्ट इज द मोस्ट वाइटल कैटेगरी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी इन इंडिया। इट इज बाइंग एयरपोर्ट्स, इट हैज मनी, डेट डिक्रीज हो रहा है, जो उसने प्लेज दिए है शेयर्स वो डिक्रीज हो रहे हैं। एंड लुक एट द नंबर, एंड आई वाज सरप्राइज, मुझे नहीं पता था ये निफ्टी 50 कंपनी है। एंड व्हेन वी लुक्ड एट द बिजनेस, मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप सूरत के हो, गुजरात के हो, आप हजीरा पोर्ट चले जाओ, आप 5%, 5% ऑफ अदानी पोर्ट्स भी नहीं देख पाओगे एक दिन में, इतना बड़ा है। इट हैज 1,20,000 एकर्स लैंड, अभी तो चालू है करना पूरा पोर्ट्स। इंडिया में नेक्स्ट 3 साल के बाद अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉमर्शियल पॉइंट पे करना है, द ओनली वन वर्ड टू कम इज अदानी पोर्ट्स। एंड दैट्स द स्टोरी, दैट्स हाउ द वैल्यू माइग्रेशन स्टार्टेड टू हैपन। 13 साल कुछ रिटर्न नहीं, एंड वंस द साइकिल मूव्ड अप, of course this investment has been only 1 month old, so returns has been not fantastic, but if you look forward for next 5 years, just imagine if manufacturing will grow to a higher segment, of course your import export will go to a better extent. People want to transfer their goods and services from one place to another, and you need a right port for doing that, and that's over here, guys. So then I'll put it down the next 10 opportunities very fast, very crisp, to make things very logical. So first is Hindalco. Now, when I talk of Hindalco, of course, it's a boring company, 15 years of consolidating breakout. If you see, these are all companies available at 2007, 2008 prices. Nothing happened into the company in last 14, 15 years. Can you imagine 15 years this company has not done anything? 15 साल बहुत बड़ा होता है, डिकेड के ऊपर का मैं बोल रहा हूँ। और
हिंडाल्को क्या करती है? हिंडाल्को इंडिया में 50 to 40% प्रोडक्शन करती है एल्यूमिनियम और कॉपर का। अभी एल्यूमिनियम और कॉपर सबसे ज्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग पिकअप हुए तो एल्यूमिनियम और कॉपर सबसे ज्यादा बेस मेटल यूज होगा। और ये बेस मेटल का आप अगर सेम चार्ट देखो तो ये आपका कॉपर है, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम और कॉपर का प्राइस तकरीबन 15 साल से एक ही प्राइस पे था। अभी मैं जब एक ही प्राइस बोलता हूं तब मैं ऐसा सोचता हूं कि डबल भी हो जाए तो एक ही प्राइस है, बिकॉज 10-15 साल में डबल होना कोई बड़ी बात है नहीं, बिकॉज इन्फ्लेशन ही इतना बढ़ जाता है। सो आप यहाँ पे कॉपर का प्राइस देखो तो कॉपर की प्राइस स्टार्ट हो गई है टिक करने में। द प्राइसेस आर अवेलेबल एट वेरी वेरी हाई रेट्स नाउ, एंड एल्यूमिनियम हैज जस्ट डन yesterday the biggest ever price in last 15 years. So copper price and aluminum price has started picking up. This company has not done anything from last 15 years. And if you see the numbers, these are radical numbers. So if you see 2018 में quarterly number इसलिए रख रहा हूँ because cyclical company generally metal में quarterly number impacts more. So अगर आप 2018 देखोगे तो 31,000 का सेल्स आज 35,000 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 2018 का है वो लेवल पे आ गया है। और नेट प्रॉफिट आप देखो तो नाउ हिंडाल्को हैज पोस्टेड द हाईएस्ट नंबर इन देयर क्वार्टरली नंबर्स इन देयर एंटायर पीरियड। सो दिस इज सम सुपीरियर थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन अ कंपनी व्हिच इज बैक्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग process. So for you, it's Hindalco. Then it's SBI. Oh, SBI, boring company, India's largest company. We are talking, ladies and gentlemen. We have bought once in 2018. Again, we didn't make return. We exited at some percentage losses, but the cycle has started picking up. Now, when I say India's largest banking is available at a 16 years of back price, it's crazy. Means मैं अगर आपको एक डेटा दिखाऊंगा and you will be shocked to see this data, and this is this. So ये दोनों डेटा है, वो हमारे डेटा नहीं है, वो मॉर्गन स्टैनली के डेटा है। जब we had a huge conversation with Morgan Stanley on SBI, so they came with an SBI report of don't underestimate cyclicals, and this is the data I've taken it from Morgan Stanley, and of course you can see the source over here. So if you see GNPL ratio, SBI is one of the least. Means आप अगर देखो बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बॉब, ICICI बैंक, और आप देखो HDFC is 0.6 and SBI is 1.1. That matters in bank. And अगर आप यहाँ पे राइट साइड देखोगे तो 2005 से उसका पैट हमने लिया है। और 3 साल अगर आप ये देखोगे जो ये पूरा इशू हुआ था बैड लोन्स में, the PAT has picked up about 2005, and the price is available still at 2006 price or 2007 price. Now this is radical. See, this is the huge value migration I'm talking about, that your price is at a price which is 16 years back and the profits are much higher than what it was 16 years back. Now this is a core content. Now if this cycle picks up, you know it can do crazy. So this is what I'm here, means आप अगर consolidation देखोगे, same consolidation आप यहाँ पे देखना, if you can see Adani Ports over here, or if you can see a Tata Chemical over here, the same thing has happened in of course an SBI also. Then it is Balrampur Chini. Oh my god, Balrampur Chini stock. Sugar doesn't make money, though we like sugar, but we don't like stocks of sugar, and that's crazy. Now Balrampur Chini is one of the most undisputed champion in sugar now. Means ये company ही एक है sugar में। अगर मैं आपको बोलूं कि 16 साल से बलरामपुर चीनी ने जीरो रिटर्न बनाया, जीरो रिटर्न, वहां से कंपनी का डेट जो 2x पे चल रहा था, 2 times डेट टू इक्विटी, नाउ इट इज 0.1 डेट टू इक्विटी। कंपनी जो प्रॉफिट करती थी 2008 में 1480 करोड़, आज करती है 5000 करोड़ का प्रॉफिट। नेट सॉरी सेल्स, आई एम सॉरी सेल्स, नेट प्रॉफिट 78 करोड़ करती थी, आज करती है 500 करोड़ का प्रॉफिट। एंड दिस अवेलेबल एट द 16 years of price and profits, what we say. And sugar, if the cycle picks up, believe me, this cycle, I mean, sorry, I just missed out. See, this happens. If you can see this, if the cycle picks up, this can be 10x, 15x in 2 to 3 years. So this is the power of cyclical moves. Then is Powergrid, one of the most boring company I've witnessed in my entire history. But again, coming back to the story of Lakshmi ji,
wealth will be created in the companies which people are not been seen for, and the wealth will be created in the place where the things are dirty but still it is beautiful. So पावर ग्रिड 150 रुपए पे 200 रुपए पे उसका आईपीओ आया था, आज 200 रुपए ही है, कंपनी का कुछ नहीं हुआ। कंपनी क्या करती है, तो 85% मार्केट शेयर है ट्रांसमिशन पावर में। लीडरशिप की तो बात ही छोड़ दो। पीएसयू में जो बजट में आपने सबने स्पीच सुना होगा कि हाउ दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू री डू रीवर्क ऑन पीएसयू वर्क्स, एंड द वे इट विल वर्क इज कैन बी एक्सेप्शनली वेल। सो ये लेडीज एंड जेंटलमैन इज अवेलेबल एट 8x, 8 गुना पे मिल रहा है पी पे, विच इज आई थिंक सो इट्स नियरली फ्री। सो सेल्स कर रही थी 8,600 करोड़, आज करती है 40,000 करोड़ सेल। नेट प्रॉफिट कर रही थी 3,600 करोड़, आज कर रही है तकरीबन 12,000 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी में कुछ नहीं हुआ है प्राइस में, इट कैन मूव, इट कांट मूव, बट दिस इज द अपॉर्चुनिटीज व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर। एंड देन कम्स एलएनटी। मैंने तकरीबन लास्ट 10 साल में एलएनटी के इतने एग्जांपल्स लिए हैं कि हाउ एलएनटी हैज नॉट क्रिएटेड वेल्थ, एंड ऑफ कोर्स that has happened because of the cyclical business of infrastructure not spending and money not coming to the systems. But if you see L&T, it can be a huge value migration because of the spending on the infrastructure what has been told by government. Believe me, the high trunky high projects or high infrastructure projects, only company in India can take is an L&T. Though there are certain issues which can be solved over the period of time, but this can be a value proposition, means same price पे तकरीबन ये 1,000 रुपए था 2007-8 में, और आज 1,400 रुपए है सिर्फ। और आप सेल्स देखोगे तो 40,000 करोड़ 2009 में सेल्स करता था, आज करता है 1,32,000 करोड़ ऑफ सेल्स। 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था तब, और आज करता है 11,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी। एंड अगेन आई एम टॉकिंग फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है तो इट कैन गेट द हाईएस्ट प्रोजेक्ट ऑफ देयर लाइफ। एंड अगेन दिस कंपनी इज अवेलेबल एट व्हाट इट वाज इन 2008. So ladies and gentlemen, it's sixth opportunity for you, and that is ACC. Now when you talk ACC, when I see cricket right now, I'm sure आपने मोटेरा स्टेडियम 2 days की टेस्ट देखी होगी, कहीं पे भी आप बोर्ड देखो ACC के दिखाने लगते हैं। और मेरा एक मानना है कि जब मैं वो कंपनी देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और मुझे वो कहीं ना कहीं वो दिखने लगती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि मुझे ये कंपनी लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल बैक्ड बाय डेटा, मेरा कोई ह्यूमन इमोशन नहीं है, पर कहीं ना आई एम श्योर आपने भी कभी ऐसा डिसाइड किया होगा ना कि मुझे रेड मर्सिडीज लेनी है, तो आपको हर जगह पे रेड मर्सिडीज दिखने लगती है। और फॉर एग्जांपल रेड स्विफ्ट लेनी है या व्हाइट स्विफ्ट लेनी है, आपको हर जगह पे वो दिखने लगती है। Now ACC, when I'm talking for ACC, the second, third in the top 5 cement production. So manufacturing के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वो है सीमेंट। सो ACC और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों कंटेंडर है। अल्ट्राटेक का साइकिल मूव चालू हो गया है तो मैंने उसको छोड़ दिया है। आई एम टॉकिंग ऑन ACC। इफ यू सी दिस ईयर ऑफ कंसोलिडेशन गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल तक, ये तो है 16-15 साल तक, पर 10 साल तक तो यहाँ रहा है। एंड वंस द साइकिल स्टार्ट्स पिक अप, this company can be a 5x 10x down the year। कंपनी सुपीरियर काम करती है, प्रोडक्शन करती है। आज सीमेंट का परसों ही 30 रुपए बोरी प्राइस बढ़ गया है। रियल एस्टेट के एसोसिएशन ने स्ट्राइक रखा है कि सीमेंट का प्राइस कम करो वरना हम नहीं काम करेंगे। बट आई विल टेल यू, द सीमेंट इन साउथ, उसके जो कार्टेल है, जो उसका ग्रुप है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप इन एनी एंटायर बिजनेस इन इंडिया। वो जो डिसाइड करता है वही प्राइस पे होता है, और उसमें नो इफ्स एंड बट्स होता है। सो व्हेन यू गो डीप इनटू द बिजनेस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स अहेड। सो इफ यू सी कंसोलिडेटिंग नंबर्स, नंबर्स में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ वही कंसोलिडेटिंग नंबर है, पर नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स में इफ यू कैन सी अ पिक ऑफ नंबर्स, लाइक फॉर एग्जांपल टीटीएम प्रॉफिट आपका 2,1600 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉफिट करने लगी कंपनी टीटीएम में, 12 मंथ्स ट्रेलिंग रिटर्न्स। तो ये चालू करने, तो अगर ये इसमें अपमूव आ सकता है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये है जो ऑलरेडी अपमूव में है, और सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कल उठ के अपमूव में आ सकती है। द सेवंथ अपॉर्चुनिटी इज फैक्ट।
सो फर्टिलाइजर एंड केमिकल, आई एम श्योर बहुत पुरानी कंपनी है, पर आपको बहुत शौक होगा, ये 24 साल से ये कंपनी ने कुछ नहीं किया है. 24 years back also it was available at the same price what it is available right now. So this company again can be a very small company, can be talked for. ये कंपनी में अगर मूवमेंट मीन्स कुछ भी 1% का भी री रेटिंग हो गया, दिस कुड बी ए 3 or 5x कंपनी. और अगर आप देखो तो नंबर्स में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, ऑफकोर्स नंबर इंटरेस्टिंग होते तो 24 साल से एक प्राइस पे तो नहीं टिकते, तो नंबर्स तो इंटरेस्टिंग है ही नहीं. पर अगर ये साइकिल में नंबर्स अपलिफ्ट होने लगे तो दिस कुड बी अ सुपीरियर अपॉर्चुनिटी. एंड फर्टिलाइजर्स की भी बात करें, यूरिया की बात करें, चंबल की बात करें, तो उसमें भी सुपीरियर साइक्लिकल मूव अपसाइड आ रहा है. सो ऑल द साइक्लिकल मूव कंपनीज हैव स्टार्टेड टू पिक अप. एथ इज एबीबी. एबीबी की बात करें तो आई थिंक सो वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर बिजनेस आई हैव एवर सीन. इस 20% मार्केट शेयर है, कंपनी ने कुछ नहीं किया है. ऑफ कोर्स इट इज अवेलेबल एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, बट कंपनी ने, आप डेटा देखोगे तो नंबर अगेन में पिकअप. कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक किया नहीं है. 355 करोड़ का, 355 करोड़ का प्रॉफिट करती थी. नाउ इट इज ओनली डूइंग अ प्रॉफिट ऑफ 300 करोड़. But in a quarter or two, if the cycle picks up, this company can be available. This company can provide an exceptional value creation to your portfolio. And ninth is Siemens. So Siemens is one of the biggest engineer company, of course, in German company. Amazing business structure it has. The company has not done a superior consolidation, but of course, it has not given a specific return, being a very big brand name over the period. There has been competition, but now people are preferring a quality over, a Chinese product or an Korean product. So of course there is a competition over that, but this can be a curtail of opportunities in coming time. The numbers we have not seen that much, but this can be a probability of a good contender of a multi story in coming time. And the last is Hester Bio. So now this company we are seeing, it's a very freshly listed company, only 7-8 साल की ही कंपनी है. इन्वेस्टमेंट में ये कंपनी वैक्सीन्स देती है पोल्ट्री में, जो तकरीबन ज़्यादा बेटर फूड जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसके हिसाब से. पर ये नॉनवेज नहीं बनाती है और कट नहीं करती है, ये जनरली इट इज़ इनटू द बायोसाइंस ऑफ द, एंड इट इज़ द लीडर, इज वन ऑफ द लीडर. एंड ये कंपनी तकरीबन 5 साल से कंसोलिडेशन कर रही है. उसके 4-5 साल में 4-5 साल तो कंसोलिडेशन हो गया है. बट इफ द साइकिल पिक्स अप एंड इफ the day it does a quarterly profit of more than 13 crores of profit after tax, this can be company to be creating a superior value. ये सिर्फ 1500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी में, बहुत छोटी कंपनी है. मैं जानता हूँ ये कंपनी को तकरीबन जब से ये 60 करोड़ की मार्केट कैप थी, तो 60 करोड़ से 1500 करोड़ की मार्केट कैप में वो कंपनी में पूरा superior change आ गया है, and it is just waiting for the right time to move down. So boss, this is the 10 10 opportunities I would be talking for. Again, this would have a vital interest in my investments, my personal, my companies and my clients investment. अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो या तो आप कहीं पे हमको पूछ लो, या कहीं पे आपके फंड मैनेजर पूछ के ही इन्वेस्ट करना. बहुत सारी कंपनीज है जो आती रहती है, पर मैंने जो स्पेसिफिक आपको पहली 5 बताई, these are one of the most conviction bets we can talk for. It's Hindalco, it's SBI, it's Balrampur Chini, it's Powergrid, it's L&T. So the top 5 are the most conviction bets what we can talk for. So the biggest question here now next come is that बात तो हो गई, पर how can we create your wealth, right? So this is a very big agenda. I'll take 2 to 3 4 minutes into it, then we can have a Q&A question if you have a very specific question onto your investment or your wealth creation. So what we do, or the people who doesn't know कि हम क्या करते हैं, we are a portfolio management service. We are SEBI registered PMS providers. We have 2 schemes, which is Wealth Mantra, where we invest in only leaders. Like upcoming में ये 10 opportunity में बात करूँ तो like companies like L&T's, SBI's and Hindalco's will be in Wealth Mantra. Companies like Hester Bioscience or company like Fact can be in Growth Mantra. So we have 2 portfolios. One is for leader and second is for the next coming leaders. We have an advisory also for a portfolio into the portfolio which wants an advisory side. We only have Growth Mantra into advisory, and we are already always we are coming up in next year, next financial year, with a group called Elite Club. So we are, if you want to have only one idea and bet a big into it, we will come down, we will pitch a very big idea to it, and then we will have a risk management system, and then you can invest into it. And of course we have our wealth management arm,
where we do a 360-degree wealth management services, and we have tied up with a company called Trust Capital for shareholders value creation product. If your company is into that mid size, or आपको यहाँ से वहाँ जाना है company point business point of view में, we would take you over there, and of course that would be a deal onto it. So why we are amazing? We are a pure process oriented driven fund. We know when to exit. We are the only company who gives you a pure say that your biggest drawdown is 18% down the line, whatever the market it can be. You have quarterly reviews, dedicated relationship manager. We have the least fees into the business, means we only focus if client earns, eventually we will earn. We have human friendly portfolio, and हमारा focus सिर्फ एक है, वो है इक्विटीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कैसे आपकी वेल्थ बना सकते हैं. So in last 9-10 years, we have done 7.2 times X in coming year with a very, very defensive thought process or right risk management. If you see, the drawdowns are very less, and of course the upsides are systematically on the growing scale. Our target है to move on 21% of CAGR returns into the portfolio, and yeah, this is for you guys. So next wealth, this is our disclaimer, so please read into it. And there is a poll which I am sending you right now. Please vote for us. If you have any queries, we can reach down to us, and if you like this program or not. So I'm putting a poll right now to it. It will be on your screen right now. Please vote for it. Any other questions you have, would be happy to answer, but I would please address you कि आप ऐसे questions पूछना जहाँ पे मैं specific answer देख सकता हूँ, vivid answer ना दूँ. So I hope this 45 minutes or 50 minutes made sense in your life, and you can create exceptional wealth. Thank you. Rohan Mehta this side. Uh, so Hardik, you will take the Q&A? Hello. Yes, I will take. There is a question from an anonymous person who is asking, how do we manage the risk? Yeah, so we have an amazing risk management system. This is pure and algorithmic system where we have created a risk management system onto your portfolio can be come down, draw down to 18% in any bad markets, not in adverse situation. अभी इसमें बहुत सारा डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ अभी, because right now it is not the platform to talk for. But अगर for example अगर आपको returns आपको जानना है तो of course you can reach to us. पर सिंपल ये है कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कब निकलना है और बाद में हम इन्वेस्ट करते हैं. तो आई थिंक सो दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट टू से, इफ यू डिसाइड व्हेन टू एग्जिट बिफोर यू एंटर, 99% ऑफ योर डिसीजन डजंट गो रॉन्ग. और आपका दो पार्ट पे ये एग्जिट इंपॉर्टेंट है. अगर स्टॉक बहुत बढ़ता है तो भी आप बुक नहीं करते हो कि बहुत बढ़ गया है, बिकॉज आपके पास नीचे का एग्जिट है. और अगर स्टॉक टूट जाता है और अंडर परफॉर्मर होता है तभी भी आप निकल जाते हो. There is one question from Mr. Junjunwala. He is asking that currently market is at a very high P, and the last few quarters result is out, and they doesn't uh, resonates or justify the euphoria in the market. Your view of market trend going forward, also how to invest in such market, either lump sum or through SIP. Hi, Krishnakant Bhai is a great friend. We live in the same building. I know him very well. So, Krishnakant Bhai, I believe P doesn't work much into the market. Generally, our system of picking up the stocks is bottom up. We don't see markets and P much. हाँ, बहुत जगह पे शायद, for example, if any certain investment, we see certain P for sure, but not onto that. I believe euphoria, there is not E of euphoria in market right now. It has just started. एंड आपको बल्क करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन टू योर पर्सनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस. सो आई एम सॉरी आई कांट कमेंट, बट एसआईपी इज फॉर नीड मैनेजमेंट एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन. सो यहीं के बीच में आपका नीड मैनेजमेंट मैनेज हो जाता है और बाकी का जो पैसा बाद में रहता है वो आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए. सो दैट्स इट. Uh, any opportunity seen in hospitality sector?
I think so. We one of the biggest opportunity we missed out was Apollo Hospital. I believe that hospitality sector, the only undisputed leader is hospital sector. Apollo, and Apollo has a huge potential, but the debt was a very big factor for us. That is the reason we didn't pick up. Any other thing than hospitality in any other than Apollo in hospitality sector, we have not much seen to it. So no answer to it. But yeah, Apollo Hospital could be a big prospective coming up company for wealth creation. If cyclicals are the focus, would it make sense to look at stocks which are kind of commodity play? Yeah, Nirav, I think so. I answered that only in the whole session that it depends on the company to company also. But all the companies, what we have told, are generally an 80% of cyclical play only. So yes, of course, the only value migrations changes from quality to cyclical and cyclical to quality. We had last 10 years of quality. Now next year, next 5 or 6 years could be cyclical. Uh, Chirag is asking that do you see technicals or fundamentals for exit? Chirag, we see all three. So we see technicals also, we see fundamentals also, and we see that if the company is not performing and we are getting a better performer than the company which is not performing, then we can reshuffle to that also. My simple point is that my 15 stocks in the portfolio should be the best performer stock. We will give time to every one of them. It's like cricket team. Everybody will not make a century for sure. I know that, but anybody who is not fit, I will not take it into my portfolio. I'm very clear to it. I am a long-term investor for the people who are fit, for the stocks who are fit. For the unfits, I would be the person who will tell to get out, and I'll take one more in the fit into the portfolio. For me, the client's profits are more important than the stories of the markets. So Dr. Harnish is asking that will telecom enter the next cyclical trend as results are encouraging from last couple of quarters? Telecom is now mostly divided into two or three companies only. So specifically, we believe Geo would be a very 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 big leader in coming time. If you see with every way, it will be very very big leader in coming time. So anything else than Geo, uh, we have not seen very closely to it, but then it would be a very big factor because Geo only has money. If tomorrow a 5G or 6G comes into the picture, it only has money to expand, and technology is a total evolution business. So I think so. Except Geo, I don't think so. There has been much interest into value creation in coming time in telecommunication. So Karambir is asking that how much more drawdown you see in the market for coming days, and should we wait for some time to invest? Uh, like Uh, this is kind of timing the market, so logically there is no answer to this. no answer to it, but I feel that this is the first time in last 20 years Nifty has gone up 106% up without doing a 10% of correction. Believe me, the correction is very much needed for a bigger long term move. No market has done a structural bull market without a bit of correction. So let correction comes, I think so the support downside is 13,500, and anything which is upside can be a good thing. So investing right or अभी या बाद में, that I can't answer, but I believe that we are in a structural bull run till 13,500 for sure. uh, your view on hotel sector, and at the same time, uh, for how much time you should wait for an investment to grow, because if it is not moving, what should be the ideal time horizon to exit your investment? So first of all, hotel sector, the day it comes as an infrastructure status, it gets an infrastructure status. That's the time only to see hotels, because hotels burns huge cash, and it's a very cyclical and seasonal place. So we are not interested into it. Second, coming to the part of के कब कितना invest, याद देखना चाहिए. It depends on your process. We don't time wise के नहीं इसको एक month देंगे, इसको एक quarter देंगे. It depends on the number, it depends on the business, because इसमें कोई स्पेसिफिक आंसर है नहीं. अगर आप
आपका सिस्टम और आपका प्रोसेस क्या बोलता है उस पर डिपेंडेंट है। सो हमारे पास ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो हमने 2 महीने में भी बेच दिए हैं, और हमारे पास ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जिसने परफॉर्म नहीं किया है 1 साल तक, बट उसमें प्रोस्पेक्टिव हमको ज्यादा अच्छा बेटर लगता है और एग्जिट पॉइंट्स नहीं आए तो हमने 1 1 साल से ज्यादा होल्ड भी किया है उसको। सो देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर फॉर इट, बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस। So Aniket has a very good question. He has learned from your Learn app course of triple P process and have found 10 different ideas, and all are doing amazing in his portfolio. Now you have shown different 10 more ideas, and he looks all the things looks amazing, but he is out of cash. So what he should do logically, and this is the same question we also face every time, ki how you should reshuffle your portfolio when you have limited cash in your portfolio. Yeah, so Aniket, your question is exceptionally perfect, and I would really acknowledge you for that. It is very tough. Believe me, it is very tough. It is as tough as now कि Indian team में किसको लेंगे हम, because everybody, the seniors are doing very well, the juniors are doing exceptionally well, और जो नए आते हैं वो तो इससे अच्छे कर रहे हैं अभी। जैसे अक्षर पटेल को मैं क्या करूंगा अगर जाडेजा आ जाएगा, तो आई एम अ क्रिकेट बफ, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल विद द पोर्टफोलियो. So in this case, you have to go with your conviction. So conviction cannot be borrowed or cannot be hired by anyone. It is your experience about it. So हम क्या करते हैं, I'll tell you my story. So मैं हर महीने देखता रहता हूँ, हमारी टीम देखती रहती है कि कौन से अंडर परफॉर्मर है। और ये दूसरा, I'll give you an example of shuffling a Whirlpool to Tata Chemical. So Whirlpool is a great company, no doubt about that, right? Means मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि Whirlpool great company नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर बिजनेस आप यूएस और कंपैरिजन ऑफ इंडिया देखोगे तो मींस अभी हम चालू भी नहीं हुए हैं, राइट? और सामने मुझे टाटा केमिकल, अभी वर्लपूल मैंने तकरीबन 6 7 3 4 क्वार्टर दे दिए, वर्लपूल में कुछ हो ही नहीं रहा था। और ब्रांड में कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि प्रॉफिट डीप हो रहा है और ब्रांड का जो पोजिशनिंग है वो भी कम हो रहा है। सो हमने वर्लपूल को बेच के हम बॉट टाटा केमिकल, बिकॉज टाटा केमिकल हैज मच बेटर ऑड्स, मच बेटर पॉजिटिव पॉइंट्स देन वर्लपूल। एंड वर्लपूल आज वही का वही है और टाटा केमिकल हैज डन 2x. So it depends on the companies which are not performing versus the company which can perform over the period of time with all your logics. So इसका कोई राइट से नहीं है। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, वी एग्जिटेड ब्रिटानिया एंड वी गॉट अदानी पोर्ट्स। अभी ब्रिटानिया कहाँ कंपनी और अदानी पोर्ट्स कहाँ पे है, पर ब्रिटानिया को ग्रोथ नहीं मिल रहा था और अदानी में सब स्ट्रक्चर ग्रोथ राइट सेक्शन पे आ रहे थे, and that's why we got it to it. So certain times you have to do that bold move of not performing a good company versus a company which can perform over a longer period of time. So I think so that's the answer I can give to you. I think we have too many Uh, questions. We can take two or three and then we no, can. no, no. I am just I'll just make it very clear that we will never answer any stock specific question. So please don't ask any stock specific question. It is not allowed as per the SEBI norms. So Rasmit has a question that do we invest in, will we pick any newly listed IPO or an upcoming IPO whose fundamentals are backed very good and who fits in your research criteria? Just the thing is that you do not have the price action record. Yeah. We did it. Yeah, we did it. Like we had DMart in our portfolio. We have Dixon in our portfolio. Then we have we were the first one to pick up LTI, Larsen and Toubro Infotech in our portfolio. Sorry, yeah, Infotech in our portfolio. So we don't have any problem. But हम कभी-कभी क्या देखते हैं रश्मित, कि इसको हम कैसे जस्टिफाई करें कि बिजनेस बढ़िया होना चाहिए, वो पहले से पेडिग्री पता होना चाहिए। तो अगर ये पता है और बैक्ड बाय नंबर्स है तो प्राइस बहुत मैटर नहीं करता है। पर हाँ, हम कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेंगे कि आज लिस्टिंग है जो आज ही ले लेंगे। तो हम वी विल वेट, वी विल सी द क्वार्टर और सो और मंथ और सो, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड फॉर इट। मींस वी विल नॉट बाय जस्ट ऑन द लिस्टिंग डे और इन अ 10 days 15 days, बिकॉज तब तक तो बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, एंड वी डोंट लाइक कंपनीज वेयर वी डोंट नो व्हेन टू एग्जिट by only 14 or 15 days of the price range. So yeah. So I'll just go for the last question. Yeah, please. Sayyam is asking that is 3 to 5 years of consolidation breakout is good to look at, or maybe your view on that?
So it depends on business to business, Sayam. So, you like, for example, Hester Bio of 4 years of breakout is tremendous versus, an SBI of 16 years of breakout. Means both have this individual virtue. So it depends on the point. The answer to you is that the more the breakout, the more bigger the breakout, the merrier the return. The is simple answer to it. Means जितना लंबा consolidation breakout उतना बड़ा आपका wealth creation opportunity. As simple as it. Any Hardik, any question we have now? No, we can end it because there are a lot many questions relating to sectors which we have already discussed. So there was a session a few months back, three big opportunities: pharma sector, chemical sector, and IT sector. We these three sectors we were bullish that time. So all the questions are related to that only. Fine, no problem. Have a great day ahead, guys. This recording will be available, and for any queries or you want anything from us, we would be available at www.turtlewealth.in, and we would love to create your wealth, and that's our primary objective in our life. Have a great Sunday, and thank you all the Turtle team for joining and making it possible. Have a great day ahead.